संपूर्ण संसार का सबसे बड़ा उल्लेखित संविधान भारत का है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, परंतु 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से देश में लागू कर दिया गया। हमारे देश के महानुभावों द्वारा विश्व के करीब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर एक सर्वश्रेष्ठ रूप में भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को लेकर अंत तक समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन का आदरपूर्वक सम्मान करते हुए और इसका गायन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। Welcome to this very exclusive auction. और ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी। उन 1000 कॉपियों में से एक जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया था। A very rare and truly a collector's item, which was meant for those जिन्होंने 3 साल रात दिन एक करके इस किताब को मुकम्मल किया था। पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। किसी भी देश का संविधान होना उस देश की कानून व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था की रीढ़ होती है। लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र देश में संविधान का होना अनिवार्य है, क्योंकि उस देश की शासन व्यवस्था संविधान में निहित होती है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे पुरखों द्वारा 3 साल की दिन रात की मेहनत कर संपूर्ण विश्व का यह एक विशाल संविधान, जो करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान का निर्माण किया। किसी भी धर्म, जाति एवं लिंग को किसी भी तंग नजरिए से न देखकर पुराने नियमों को तोड़कर एवं सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति रखने वाला यह गौरवलान्वित संविधान का निर्माण हमारे पुरखों ने काफ़ी कड़ी मेहनत से किया है। वैसे संविधान निर्माण की बात 1857 के हुए विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने इसकी आवाज़ उठाई थी, परंतु ब्रिटिश साम्राज्यवादी की इस नीति ने इस आवाज़ को दबोच दिया था। परंतु जब बाद में महात्मा गांधी जी द्वारा देश के प्रति स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तमाम बड़े आंदोलनों का उद्धार हुआ, उसी प्रकार भारतीय संविधान निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। My mentor Gopal Krishna Gokhale presented to the British government a note on the Constitution in 1914. And the British said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. Now it works. What will you do with this spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon
to drive the English rulers away so that we will have the power to make our own constitution. देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी और उनके साथियों ने संविधान निर्माण कार्य की बड़ी अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस नेता एवं मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक प्रस्ताव पारित किया जिन्हें नेहरू रिपोर्ट के नाम या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना जाता है। आजादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदलकर नहीं मिला करती। इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जवाब में अंग्रेजों भारत में अंग्रेजों ने 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ एक्ट पारित किया जिसमें भारतीयों की उम्मीदों से काफ़ी अलग था, जिस वजह कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच और भी अधिक दूरियां बढ़ने लग गई थी। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में जब डॉक्टर तेज बहादुर ने सभी पार्टियों से यह अनुरोध किया कि वह एक साँचे संविधान का निर्माण कर लोकतंत्र में अपना सहयोग दें, उधर विश्व युद्ध की लड़ाई और इधर आज़ाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का शासन तंत्र ढीला पड़ रहा था। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री उस समय मिस्टर चर्चिल युद्ध तो जीत गए परंतु चुनाव में वो हार गए थे और नए पीएम के रूप में क्लेमेंट एटली वहाँ की प्रधानमंत्री बने। उनके पदभार ग्रहण करते ही क्लेमेंट एटली ने यह आदेश दिया भारत के लिए एक अलग स्वतंत्र संविधान बनाया जाएगा और उसमें हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग देशों का भी निर्माण इसके द्वारा किया जाएगा। इसी दौरान क्लेमेंट एटली पीएम ऑफ ब्रिटिश उनके द्वारा 3 व्यक्तियों को भारत के संविधान निर्माण के लिए 3 व्यक्तियों को भारत भेजा और जिन्हें हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। Believe me, India will be a much better place after you have left us to ourselves. That's precisely what we ought to do, Mr. Gandhi. Our only fear is whether it's possible to minimize the violence and the bloodshed which is predicted in this subcontinent when it breaks into Hindustan, Pakistan, and Princeton. Then don't break India. But what about Mr. Jinnah's Pakistan? Why will you listen to my brother Jinnah if you are not ready to listen to others? And why do you presume that Jinnah will not see sense when you meet him in Shimla? I do wish our hopes come true when we meet in Simla, but it is important that you're also present there. What will I do there? I'm neither a member of the Congress nor of the Muslim League or of the other outfits that you have invited there. But still, we will need your wise counsel in Simla when discussions are held about an interim government and a new constitution for India. मोहम्मद अली जिन्ना को यह बात बड़ी कड़वी लग रही थी, जिसे वो महज हिंदुओं की पार्टी समझ रहे थे। उसमें अधिक सदस्य मुसलमान थे और उनकी अध्यक्षता भी एक मुसलमान ही कर रहा था। शिमला के इस ठंडी हवा में उनका गर्म होना लाजमी था। The winds of change have swept the old order all over the world, ever since this bloody war has started. And our new Labour government of Britain is of the opinion that the time has come for Indians to decide how they are going to govern themselves. And the purpose of this meeting is to have discussions with all of you. The representatives of British India and the Indian states is to secure a way of framing the constitution of a free India.
जिन्ना साहब चाहते थे कि पूर्व में असम व बंगाल तथा पश्चिम में मुस्लिम राज्य के 4 अलग संविधान बनाए जाए और भारत के लिए अलग संविधान हो। कांग्रेस के नेताओं के लिए यह सूरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। हो जाना लाजमी था। मैं और मेरे साथी इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दोयम हैं जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जमा होगी एक आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए। My colleagues and I stand here for the independence of the whole of India. Other matters are subsidiary to this and can be discussed and decided in the Constituent Assembly, which will make a blueprint for an India of our dreams. Dreams that may turn into nightmares for the Muslims of this country if we allow the Congress to have its way. That's why it's imperative that we Muslims of India have our own group of states that may decide its own constitution. What are the groupings you have in mind, Mr. Jinnah? All the Muslim majority states like Sindh, Punjab, Balochistan, and Northwest Frontier Province will form the first group. And the states of Assam and Bengal will be in the second group. Mr. Jinnah, if, as you suggest, these groups separate from the body of India, well, then pray tell us, what is left for the Constituent Assembly to make laws for? The rest of India in the center and the south? And what happens to the princely states? Well, they can have their own constituent assemblies. This is not acceptable to us. We are here to discuss the fate of a united India, not to break India into pieces. And if this is the purpose of this mission, I'm afraid we have no business being here. In that case, I'll be forced to adjourn the meeting. जिन्ना साहब चाहते थे कि हिंदुस्तान के पूर्व में कल कुछ लोगों ने ग्रुपिंग्स के लिए एक तजवीज़ पेश की थी जो हमारे मुल्क को मजहब व मिल्लत की बिना पर बांटने की एक पेशकश है। हम ऐसी किसी भी तरह की पेशकश के सख्त खिलाफ हैं। हिंदुस्तान एक मुल्क है, आप सुन रहे हैं लियाकत अली खान साहब। हिंदुस्तान एक मुल्क है और एक ही असेंबली इसका आइन बना सकती है जिसमें तमाम सूबों, इलाकों, मजहबों और फ़िरक़ों के चुने हुए मेंबरान और राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे। References were made yesterday to groups of provinces arranged on communal lines. We are totally against any machinery to run any such groupings. India is one nation and it needs its constitution to be made by one assembly, which has elected representatives of the states, region, religion, and the nominated representatives of all the princely states as well. This is what I call the tyranny of numbers. Everyone knows here that such an assembly will have a brute majority of caste Hindus and their party, the Congress. And in the game of numbers, minority Muslims will have no say left. That's why we need 2 assemblies, so that Muslims can frame their own laws. मगर मेरे भाई जिन्ना, क्या आज तक हमारे पास हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग आइन थे? नहीं थे ना? तो फिर यकबयक आज इन 2 कानूनों की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों? I trust the British sense of fair play. But with the Hindus ruling India through their Congress, Muslims need a special constitutional protection. I have gone through the length and breadth of India, and I know how vulnerable Muslims are feeling today. And as their sole representative here, it is my duty to... ये आपसे किसने कह दिया कि मुसलमानों के अकेले नुमाइंदे आप ही हैं? अरे भाई, मुसलमान तो हम भी हैं, क्यों मौलाना? Well, I do not need to establish my credentials here.
Because the Muslims of this country know who stands here for their rights and who here is a paid quisling Muslim masquerading as their representative. I take strong objection to such a remark being made about my esteemed colleague. Mr. Jinnah, if I've got you right, you need these groupings because of the communal mistrust that exists in this country. That's perfectly right, Sir Stafford. Muslims cannot be a part of a constituent assembly which will be dominated by caste Hindus. May we deal with first things first, please, which is to dispose of the problem of the Indo-British relationship. For that, we need to make our own constitution for a free India. The communal problem can be dealt with later. Later? Later, there'll be no Muslims left alive in India if Congress is given its way. And that is unacceptable to me. If Mr. Nehru doesn't like the idea of groupings of states within the same India, then it will be better to have two Indias. One for Hindus and another for Muslims. Hindustan and Pakistan. And a Princestan, the federation of the princely states. This is ridiculous. It clearly indicates the reality behind the groupings proposal Mr. Jinnah is making. I will not be a party to this balkanization of India. No! India is one and will remain one country. कड़वा सच ये था कि अंग्रेज United Dominion of India will be given independence as and when the appropriate time comes. In the meanwhile, two constituent assemblies will frame the constitution. One for the Muslim majority provinces, which will be grouped Balochistan, Sindh, Punjab, and Northwest Frontier Province as the first, and Bengal and Assam as the second group. The Hindu majority provinces in the central and southern India will form another group and make their own constitution. But the central government will be empowered to run foreign affairs, defense, and communications, while the residual powers and the responsibility will belong to the provinces coordinated by their group. How can you have two assemblies for one nation? Are you suggesting that there will be Hindu constitution and Muslim constitution? And which constitution will be applicable to the central government? But sir, Assam is not a Muslim majority province. Then why? Gentlemen, please, these are only recommendations which have yet to be accepted by the two main parties, that is the Indian National Congress and the Muslim League, whose working committees are going into details of this plan, and there is no need for us to add anything more at this moment. Thank you. But Nehru is adamant he won't agree to such a proposal. I'm ready to sit together with Jawaharlal, for whom I have great regard, to convince him of the value of these groupings, since he has no desire that the British stay back in India any longer. And if I'm right, then even British do not desire to stay back here any longer. Not just Nehru. The entire Congress Working Committee is dead against the concept of two constituent assemblies and two separate constitutions. In that case, they must agree to partition and for the creation of two nations. Because the only way I can agree to one union of India is if Congress agrees to two groups, as proposed by me. बापू, वर्किंग कमेटी ने जिन्ना साहब की ग्रुपिंग्स की तजवीज़ के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है। The Congress Working Committee agree that the groupings will hinder the concept of a united India and rejects any such demands put by external pressures which will hinder the working of any body constituted to decide the future of an independent country. There should be a sovereign body for the purpose of drafting the Constitution, and it must be unhindered by any external authority. ये है हमारा दस्तावेज बाबा।
हम अपने देश का बंटवारा कभी कबूल नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने हमारे साथ चाहे कुछ भी किया हो, उनके कैबिनेट मिशन ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उन्हें जल्दी है कि वो हमारी छाती से उतरे और जाएं। अब ये हम पर है कि हम कैसे अपनी इस दुखी अभागी धरती को सुखी और भाग्यशील बनाएं।